and welcome to my YouTube चैनल सत्या द जग। आज इस वीडियो में हम केमिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले डिमेंशनलेस नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो यह है वीडियो चैनल सत्या द जग। तो सबसे पहले देखते हैं डिमेंशनलेस नंबर्स क्या क्या है। सबसे पहला आता है रेनॉल्ड्स नंबर, फिर प्रेंटल नंबर, स्मिथ नंबर, लेविस नंबर, नसेल्ट नंबर, शेरुड नंबर, स्टैंटन नंबर फॉर हीट ट्रांसफ़र, स्टैंटन नंबर फॉर मास ट्रांसफ़र। इसके बाद आता है ग्राशॉफ्स नंबर, रेले नंबर और डिस्पर्शन नंबर, और लास्ट में आता है पेकलेट नंबर। तो यहाँ पे नसेल्ट नंबर और शेरुड नंबर आपस में लिंक्ड है। नसेल्ट नंबर इज द हीट ट्रांसफर एनालॉग ऑफ शेरुड नंबर एंड शेरुड नंबर इज द मास ट्रांसफर एनालॉग ऑफ नसेल्ट नंबर। Similarly, Prandtl number is the heat transfer analog of Smith number, and Smith number is the mass transfer analog of Prandtl number. Stanton number for mass transfer is the mass transfer analog for Stanton number for heat transfer, and Stanton number for heat transfer is the heat transfer analog for Stanton number फॉर मास ट्रांसफ़र। तो और एक बार हम इन सभी नंबर्स को दोहरा देते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, प्रेंटल नंबर, स्मिथ नंबर, लेविस नंबर, नसेल्ट नंबर, शेरुड नंबर, स्टैंटन नंबर फॉर हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, ग्राशॉफ्स नंबर, रेले नंबर, डिस्पर्शन नंबर एंड पेकलेट नंबर। तो अभी हम इन सभी नंबर्स को इन डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहला आता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर डिनोटेड बाय RE इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स dV रो बाय म्यू। ये इसका फॉर्मूला होता है। d डायमीटर ऑफ द पाइप, v वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू एक्स वी रो बाई म्यू। जब फ्लैट प्लेट के ऊपर से फ्लो होता है तो एक्स लेंथ ऑफ द प्लेट, और जब पाइप के अंदर से फ्लो होता है तब डी डायमीटर ऑफ द पाइप। इसके बाद आता है प्रेंटल नंबर। प्रेंटल नंबर इज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसको हम लोग नोट करते हैं म्यू बाई रो डिवाइडेड बाई के बाई रो सी पी। इसको डिनोट अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू सी पी डिवाइडेड बाई के। नेक्स्ट अपना आता है स्मिथ नंबर डिनोटेड बाई एस सी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाई मास डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू म्यू बाई रो डिवाइडेड बाई DAB इज इक्वल टू म्यू बाई रो DAB। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, प्रेंटल नंबर इज द हीट ट्रांसफर एनालॉग ऑफ स्मिथ नंबर एंड स्मिथ नंबर इज द मास ट्रांसफर एनालॉग ऑफ प्रेंटल नंबर। नेक्स्ट अपना आता है लेविस नंबर। लेविस नंबर इज थर्मल डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाई mass diffusivity is equal to K by rho Cp divided by DAB is equal to K by rho Cp DAB। ये बन गया इसका फॉर्मूला। DAB is the diffusion coefficient और diffusivity, K is the thermal conductivity। नेक्स्ट अपना आता है Nusselt number. Nusselt number denoted by Nu used in heat transfer is convective heat flux divided by molecular heat flux
is equal to h delta t divided by k delta t divided by L is equal to h L by k. H is convective heat transfer coefficient, K is thermal conductivity, and L is the length of the plate or pipe. Next अपना होता है शेडूड नंबर. शेडूड नंबर is convective mass flux divided by molecular mass flux is equal to Kc delta C divided by dAb delta C divided by L is equal to KcL by dAb. Kc is the mass transfer coefficient, dAb is the diffusivity, L is the length of the pipe or the plate. Next is Stanton number for heat transfer. Stanton number for heat transfer is convective heat flux divided by bulk flow heat flux is equal to H delta T divided by rho V Cp delta T is equal to H by rho V Cp. V is the velocity, rho is the density, H is the heat transfer coefficient. Convective. Stanton number for mass transfer is the convective mass flux divided by bulk flow mass flux is equal to Kc delta C divided by V bar delta C equal to Kc by V bar. V bar is the velocity. आगे बढ़ते हैं. आगे का नंबर है Grashoff's number. Grashoff's number is generally used for free convection. Grashoff's number is equal to buoyancy force divided by viscous force is equal to G beta delta T x cube divided by nu square. Nu is the kinetic viscosity, beta is 1 by T in Kelvin, delta T is temperature difference, and x is the length. Next is Peclet number denoted by PE. PE जैसे कि ये पे Grashoff's number था G beta delta T x cube by nu square. is a Peclet number. PE is equal to Reynolds number into Prandtl number. इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, is equal to convective transport divided by molecular transport. Dispersion number. Dispersion number is equal to 1 by Peclet number is equal to molecular transport divided by convective transport. Next अपना आता है Rayleigh number RA is equal to Grashoff's number into Prandtl number. Rayleigh number के बाद आता है Grates number GR. Grates number GRZ. Grates number. Grates number is Reynolds number into Prandtl number divided by L by D. L is the length of the pipe, D is the diameter of the pipe, and this number is generally used in thermally developing flow. Thermally developing flow. That's all about the important dimensionless numbers. और भी dimensionless numbers मैं अपने आगे वाली वीडियोस में आपको दिखा दूंगा, बोल दूंगा.
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके महत्वपूर्ण सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद, जय भारत।